Very good evening to all. Namaskar. Namaste, We sir. would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, AYUSH Samriddhi International Webinar Series at milestone of 2692. Thank you for joining. मैडम कामिनी जी काइंडली एडमिट करते रहेंगे, कृपा होगी. I would like to come to Professor Kamini Dhimanji from Vadodara and Dr. Sulochana Arige, Professor and HOD, Department of SRPT, Dr. BRKR, Government Ayurvedic Medical College, Hyderabad. So welcome Dr. Sulochana ji. And as usual, as always, Professor Kamini Dhiman is really, she is conducting, coordinating and moderating these two series of webinars. Excellent manner. So without wasting much time, I would like to welcome all the guests with us. Dr. Ramadevi ji is with us. Welcome. Dr. Nishant Shukla ji is with us. Welcome, Dr. Nishant ji. And all are our genius experts of the dais. I would like to welcome all the experts. Thank you very much for joining. And I would like to request Professor Kamini Dhiman ji for her valuable initial opening remarks. जी नमस्कार पवन सर, नमस्कार रमादेवी मैडम, नमस्कार, वेलकम डॉक्टर शिरीषा and Namaste, ma'am. namaste, Namaste, ma'am. namaskar to all the experts. Namaste, join over here and welcome to all the experts from all over India. Welcome Manjushri and welcome all of you in the series of gynecology. Today we are again over here to discuss all the female disorders, gynecological issues, and how we can manage them by our Ayurvedic principles on Ayurvedic treatment modalities. Today we are having Dr. Suleshna Arige. She is PG from Jamnagar and working at as sir told at BRKR Ayurvedic College, and she is really a good orator also. And her experience is, she is very much experienced. I can say that more than 30 years she is having experience, and we all will be privileged to listen to her. And after her presentation, we will have question answers and doubt solving session. So welcome, Sulojana, over to you. Thank you, madam. Madam, I request you to kindly to share the slides, Yes, madam. yes, Yes, sir madam. is going to share. Thank Sir you, is madam. going to share. Yeah. Pawan sir. Sir will share. Yeah. Second slide, ma'am. कमिनी मैडम आप एडमिट करते जाइएगा क्योंकि मैं Second slide, प्रेजेंट please, करते में madam. कुछ नहीं कर रहा. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Very good evening to all. Today I would like to highlight the women health with a special reference to the menstrual disorders and their management. Next. Next slide. You continue speaking, they will sir will manage, no problem. Yes. The wisdom of Vedas has evolved into various systems of knowledge. Each system of knowledge is called as Shastra. The sages of yore systematically organized the knowledge into granthas, texts. Ayurveda, as the name suggests, it is the science of life and health, including medicine and surgery. Next. The Chaturvedas, the Rig Veda, the Sama Veda, the Yajur Veda, the Atharva Veda. A menstrual disorder is an abnormal condition in a woman's menstrual cycle. Problems ranging from heavy period, painful periods to no period at all.
the prevalence of the menstrual disorder in comparison of data owing to school absenteeism during the menstruation in developing nation shows that the percentage of girls who remain absent during menstruation is around 24% in India. Next slide. Abnormal uterine bleeding, that is hypomenorrhea, oligomenorrhea, menorrhagia, are the common problems included in the menstrual disorders. There are 8 Artava Dushtis: Anartava, Kshinartava, Nashtartava, and Asrugdara are described by the Acharyas along with internal medication. The Ayurvedic therapies like Matravasti, Yogavasti, and Yoni Pichu are helpful in relieving the menstrual disorders. Next. If you see the Artava definition, according to Ayurvedic classics, Rutau Bhavam Artavam. And Sanyam Rajascha Narinam Kale Bhavati Gachati. They manifest in during stipulated time and they ceased off. And Arvagapi Yad Ahara Visheshat Arogyacha Iti. That means it is the quotation given by the Kashyapacharya, which means the onset of menstruation is influenced by the Ahara and Arogya and the nutritional status of the young girl. And this is the quotation given by the literary granthas Kujendu Hetu Pratimasi Pravartamane Artavam. It is the effect of the moon on menstrual cycle has been highlighted in this concept of the classical texts. Next. Rajaha Pravartate, the entire essence of the menstrual health is hidden in this principle or in this shloka. Ki Rajaha Pravartate yasmin masi masi vishodhayet sarvan sharira doshascha na prameha anyataha striyaha. This is the quotation given by the Bhava Prakasha Prathama Khanda. And due to regular menstruation, the shodhana of the body occurs. All unwanted material will be expelled out of the body and the uterine wall, and the uterine wall will be cleared since the endometrium will be shed off with the bleeding. It cleans the Garbhashaya, Kshetra, and will prepare for a good environment for the conception. If menstrual cycle is regular, women had deliveries, then the chances of getting uterine fibroids will be very less. Next slide. विंशतिर्व्यापदो योनिर्निर्दिष्टा रोगसंग्रहे मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टार्तवेन च जायन्ते बीजदोषाश्च दैवाच्च शृणुः. In this quotation, the pradushtartava, artava doshas, the menstrual disorders are the basic causative factors for manifesting the Vinshatir Yoni Vyapat. So that has been highlighted in this concept. The menstrual abnormalities are the root cause of the Vimshatir Yoni Vyapas. In a regularly menstruating woman, the occurrence of the Yoni Rogas will not be there. Next. Vina pushpantu yanari yatha kalam pranashyati krusha hina bala krudha sapi chokta katambhara. Here, the primary amenorrhea or a delayed menarche has been highlighted. A woman who has not attained the menarche will be emaciated, lethargic, irritable, and she will have an all ill health. Because of increased vata, the rajonasha takes place. Hence, out of the Ashiti, 80 Vata Rogas, Rajonasha is one. Irregular menstruation leads to polycystic ovarian disease. The woman who suffers from PCOD will have the double-fold risk of getting the ovarian carcinoma. So, anovulatory cycles are the basic cause for the female infertility. Menstrual disorders, abnormal uterine bleeding, that in short form we will call it as a AUB, and is a general category that includes any bleeding from the menstrual or non-menstrual causes. Hypomenorrhea, it is the abnormality light menstrual periods, and menorrhagia, it is an abnormally heavy and prolonged periods. Metrorrhagia, it is the bleeding at irregular times, especially outside the
expected intervals of the menstrual cycle. If there is excessive menstrual and uterine bleeding other than that caused by the menstruation. Next slide. Menometrorrhagia, and it is a condition in which prolonged or excessive uterine bleeding occurs irregularly and more frequently than normal one. And if you want to see the oligomenorrhea and how it has been defined, like a light or infrequent menstruation that occur more than 35 days apart, and amenorrhea, of course, it is of two types. Amenorrhea denotes that is the absence of the menstruation. The two categories. One is the primary amenorrhea, which occurs when a girl does not begins the menstruation at all by the age of the 16 years. And the second category, secondary amenorrhea, it is when the periods that were previously regular and which stops for at least 3 months, it is known as a secondary amenorrhea. And the dysmenorrhea, the painful menstruation, it is also known as a kruchartava or kashtartava or sometimes udavartini yonivyapata, painful menstruation of sufficient magnitude so as to incapacitate the day-to-day activities. Next slide. Now we'll see the menstrual disorders according to the Ayurveda. There are Ashtartava Dushtis, and apart from that, Anartava, Kshinartava, Nashtartava, and Asrugdara are described by the Acharyas. For better understanding of Artava Vyapat, the following classification is useful. Like some disorders are related to the quantity, some disorders are related to the properties of the constituency of the basic menstruation itself, and some are related to the period of the amount and the period of the bleeding and frequency of the bleeding, interval of the bleeding. Like Artava Srota Dushti, like if you want to see the pathogenesis according to the Artava Srotas, like Atipravruti, Pittaja Yonivyapat, and Asrugdara. Sangha and Srotowise Sangha, if you want to go through the pathogenesis, like Karnini and Arajaska, and Sira Granthi, Arbuda and Karnini, Vimarga Gamana, that is Udavarta Yoni Vyapat. Next slide. Parimana, that is quantity related Artava Vikruti, and Artava Adarshana, Heenartava, Swalpartava, and Bahulartava. These are all nearest, having the nearest pathogenesis. And Kala related, that means a period related Artava Vikrutis are Purva Kalina Artava Srava, like how we interpret according to the modern, like a precocious menstruation and a precious menstruation, like that. So, Rutukalina Atyartava, Artava Srava, other than the Rutukala. Next slide. Artava Vikruti and their similarities, similar conditions, like for a comparison with the modern science, like Avrutartava, it can be known as like a cryptomenorrhea, and Vastavika Anartava, it is real amenorrhea, and Mithya Anartava, apparent amenorrhea, the Rajonivrutti as menopause, and Rajokshaya, perimenopausal conditions, Nastartava or Artava Darshana as a secondary amenorrhea, and Alpartava, Kshinartava, and Artava Kshaya, like we can compare with the oligomenorrhea, and the Heenartava is hypomenorrhea, and Shrighra Artava, that is interpreted as the polymenorrhea, and Bahulartava is like a epimenorrhea, the Kastartava or Kruchartava, we can compare with the like dysmenorrhea, and Atyartava as menorrhagia. Next slide. Ashtartava Dushtis, as everybody is aware with this Artava Dushti, Vataja, Pittaja, Kafaja, and Kunapagandhi, then Granthi Bhuta Artava, Puti Puya Artava, Kshina, and Mutra Purisha Gandhi Artava. These are the Ashtartava Dushtis described in the classics. Next slide.
some of the menstrual disorders like anartava amenorrhea and kshinartava as scanty bleeding and atyartava rakta pradara, as in the earlier slide also we have observed as a menorrhagia, and kruchartava as a dysmenorrhea, irregular menstrual cycles, and polycystic ovarian disease. Next slide. Now we will see what are the single herbs, Kaushaushadis are available for treating the various menstrual disorders. Like if you want to say the single herbs, Kumari, Hingu, Tankana, Ashoka, Shatapushpa, Shatavari, Evani, and Ashoka, etc. See, out of these single herbs, some of them are having the Kashaya Rasa, Shita Virya, and Ushna Virya properties. And the Dravyas which are having the Ushna Virya, and they are useful in treating the amenorrhea or hypomenorrhea or Kshinartava, like that. So as Artavam Agneyam. So the similarity, Vriddhi Samanaihi, based upon this concept, the Dravyas which are having the Ushna Virya, and they are supposed to generate the menstruation. So that's why certain drugs are used for the Artavajanana. And also the Rasayana Dravyas are also we use as a uterine tonics for correcting the irregular menstrual period. See how they act, that means they build up they strengthen the Artavaha Srotas and or Kshetra or Garbhashaya and Artava Srotas, and they are enabling the endometrium for a proper thickening of the endometrium, so that the menstruation will occur. It should occur. So that means the paripushti of the Garbhashaya Kala they are making. So the drugs which are having the anabolic effect on the body, they can also like a rasayana, they can use as a, we can use as a uterine tonics, and also the dravyas which are having the agneya property we can use. And here are some drugs will act, some plants will act as a phytoestrogens. The best example for that is the Ashoka, whenever we deal with the menstrual disorders or the uterine disorders, the first comes is the Ashoka. So Ashoka, the bark of the Ashoka we use, and this having the alkaloids and saponins and the phytoestrogenic activity it is having. That's why as a whole uterine tonic, we are using the Ashokarista in various menstrual disorders, and likewise the Shatavari. This asparagus racemosa is also having the Rasayana effect, and it is a very good pro-estrogenic hormone. So the various disorders of the pertaining to the menstruation and uterus, they are because of the hypoestrogenic conditions also. In certain conditions, so Shetavari and Ashoka proestrogenic drugs we can use. And if you want to see the compound formulations, Sanyoga Dravyas like Kumar Yasava, as everybody is aware of these products, Ki Kumar Yasava, Ashokarista, and Kulatha Kashaya. Kulatha, this Dolichus is explained by the Acharyas as a food material also we can use, and since it is having the Agneya property, it will produce the Artava, and Raja Pravartanivati, Vijayavati, Kanya Lohadivati. So we can, according to the indications and condition of the patient, if the patient is having like a PCOD conditions or the thyroid problems, then we can choose the Kanchanara also to prevent the proliferation of the these cystic conditions. And according to the various menstrual disorders, we can choose the single herbs or the preparations or the other treatment modalities. Next slide. Next slide.
the single herbs and formulations in Kruchartava and dysmenorrhea. And earlier I was telling ki for treating the various menstrual disorders, the best preparation of the described in the classics is the Pushpadhanvarasa. And this Pushpadhanvarasa is known for its potent effect, it gives the stimulant effect on the ovarian tissue. Hence, it is a very potential and highly useful drug for the ovulation and for the follicle generation and all. So, Pushpadhanva Rasa is the best drug of choice for the oogenesis, since it is having the oogenetic property. So, we can use this Pushpadhanva Rasa. And now we will see the single herbs and formulations in the Kruchartava, that is dysmenorrhea. And if you want to see the single herbs, the Nirgundi, Vitex, and Ardraka, Lashana, Yavani, Eranda, Hingu, Musta, Shunthi, Shatapushpa, Jatamamsi. And the compound preparations like Shankhavati, Nirgundi Kashaya. This Nirgundi Kashaya, Nirgundi Vitex. One of the species is Vitex agnus catus. This species we can use as not only as a Vedanahara for getting rid of the dysmenorrhea, but also to rectify almost all menstrual related disorders. And this will also produce the ovulation and regularizes the menstrual cycle. So this is the best menstrual friendly drug, Vitex. So this Nirgundi Bija Churna we can use along with honey, or we can make it as a decoction and or as a kashaya, and we can take it as a internal. We can give it as a internal medication as a Vitex. And the other formulations, Samyoga Dravyas, Shankhavati, Nirgundi Kashaya, and Hingvastaka Churna, Mahanarayana Tela, and these Avartita Telas, Panabhyanga, Parisheka, and then Nasya also we can use. Hence it is taken as a Mahanarayana Tela, and Dashamula Kashaya, and then Shatapushpadi Churna. And next slide. The formulations which are used in other menstrual disorders like Ashoka Arista, Dashamola Arista, Lakshmana Arista, and Samshamani Bati, Kanchanara Gugulu, Vruddhi Badhika Bati, Hingvastaka Churna. Here, the Hingvastaka Churna, as we are aware that this will rectify all the basic metabolic problems. So that's why, and it also rectifies the HPO axis. So Hingvastaka Churna we are using. And in some to get rid of the PCOD conditions, we are using very frequently this Vruddhi Badhikavati and Kanchanara Gugulu. This will prevent the proliferation of the cysts. So hence it is relieving the proliferation, or it is reducing the polycystic ovarian cysts. So hence it is regularizing the menstrual cycle. And Samshamani Bati, it is acting as a rasayana, and as well as it relieves the any inflammatory condition or infective condition in the pelvic cavity. So hence it is used. And Dashamola Arista, it will have the anabolic effect on the arthavasrotas. Next slide. Now we will see the other treatment modalities like Abhyantara Aushadhis we know, and the other treatment modalities like Sthanika Chikitsa and the Panchakarma therapy or detoxification therapy. And in this Panchakarma therapies also, like Shodhana we can choose depending upon the condition of the patient or the type of the menstrual disorder, and Shamana procedure also we can choose, like Vamana in PCOD conditions or Kafaja Granthis like that, and in Kafaja Vikaras, and Virechana in the Pittaja, and Vasti, of course it is very good treatment modality in the Vataja menstrual disorders caused by the Vata. And they include the other vastis like Anuvasana Vasti, Astapana Vasti, Matra Vasti, Yapana and Yoga Vasti, and Vaitarana Vasti, Panchaprasrutika Vasti. Here, I would like to highlight the best part of this Matra Vasti for to get rid of the
irregular periods, PCOD in young girls who are unmarried, we can choose this Vasti Karma, Matra Vasti, and it is done as under all precautions. And this while doing the Matra Vasti also, you should also see the we should do the abdominal examination and make sure that the anorectal conditions also, because sometimes the patient may be having the thyroids or the anorectal pathological conditions like fistulas, like that. So in such conditions, with all precautions, we can choose the Vasti, and you can do the administer the Vasti. And Vasti Nirharana Kala is also very important, and make sure that the patient is also she is not having any sort of the liver function diseases or something like that. Or sometimes in some cases we have also observed that with the Vasti Karma is transient raise in the serum bilirubin and all. When we have stopped the procedures, so the serum bilirubin has gradually reduced. So and this peristaltic movement, bowel sounds also, it is very important. In sometimes chronic constipated patients, that may also lead to the obstruction of the intestines. So very rare complications, but we should also look for such things when make sure when the patient is not having such severe problems, and we can administer the Vasti Karma. And Vasti, it acts as a gut brain also. It is the researchers are interpreting that the pelvic plexus, the drugs will act as a on the pelvic plexus, and they stimulate the pituitary and all HPO axis hormones. It will get release the hormones from the endocrinal glands. So that's why the Vasti Karma or whatever the procedures we are doing on the pelvic girdle, they are very good and giving the highly therapeutic effect on the menstrual disorders, because since it is interpreted as the having the brain of the gut, and it rectifies the pelvic conditions, and has there the mucous membranes, the absorbability of the medicine and its efficacy is more when it is absorbed through the mucous membrane. So hence why we are choosing these procedures. And next slide. A few examples, indications of the Matravasti and all, it has been given in the chart, like Matravasti with Chandana Bala Lakshadi Tailam. Very frequently we are doing this Matravasti with Chandana Bala Lakshadi Tailam in the patients who is having this abnormal uterine bleeding and dysfunctional uterine bleeding or Atyartava. It is giving the very good results along with the internal medication. And this Matra Basti with Mahanarayana Taila, of course, the Charaka has described the first Taila in the Unirogas and Univapas menstrual disorders as a Mahanarayana Taila. As I said, these tailas, avartita tailas, they can be used for Panabhyanga Parisheka and Nasya also. And this relieves the Kruchartava, the dysmenorrhea. And Matravasti with the Sahasraradi Taila, this is very effective in relieving the Anartava. And then it also relieves the PCOD conditions, Sahachara. And Sahachara we are using even in the cervical erosions also. This Matravasti with Kshirabala Tela. Kshirabala Tela is, this improves the thickness of the endometrium and it strengthens the uterine wall and entire kshetra, and hence it is like regularizing the menstrual cycle, and it is also relieving the Kashtartava. Then the Astapanavasti with Mustadi Kashaya, and which is known to relieve the Asrugdara. And then Yoga Vasti like Anuvasana and with Shatavari Krita, Niruha with Dashamula Kashaya, and Anartava also. In perimenopausal conditions also, we can choose the Prakshepa Dravya with like Arjuna, then Jata Mamsi. We can add as a Prakshepaka Dravya with Arjuna and Jata Mamsi and Shatavari also, along with the Kshira Bala Tela or Bala Tela, Balashwagandha Tela.
we can administer in perimenopausal women also. This, if you want to see this Patyahara in Anatava, and the best is the Yava, Tila, and Kulatha, Shalidhanya, Godhuma, Yavani, and Papaya, as these contains the micronutrients, and some of them like a Godhuma, wheat contains the vitamin E, and Kulatha is having the Ushna Virya property, and it is going to generate the heat, or it improves the pelvic circulation. And tila also, and especially this kala tila, tila di kashaya or churna we can use, or as a food dish we can use the tila. And Shweta tila, as everybody is aware, it is like having a rich in calcium. And Patyahara in Anatava, next slide, this already we have seen. Next slide, madam. Patyahara in Atyartava, like Shalidhanya and Dugdha, Takra, Dahi, Draksha, Godhuma, Ghruta, and Dhanyaka. And they are supposed to avoid all the spices, excessive spices, then salty things, then all pungent things, the spices, they need to avoid so as to this suppress the pitta dosha. Next slide. The Patyahara in the Kashatava, like Tila, Ardraka, Lashana, Gruta, Dugdha, Dadima, Hing, Mudga, Jiraka, and Yavani. Most of these drugs are having the Vatanulomana property, and also they facilitate the Artava to generate easily. So with these Bhojana Dravya or Ahara Dravya, so the suppression of the Vata, Apanavata takes place, and for easy moving of the Artava from the track is facilitated with these dietic these things. And apart from these, next slide, madam. In earlier speaker also, they dealt with these like cycle plan of the with these food material. Like first half of the cycle, we can take the flax seeds and pumpkins, and then the later half of the cycle, they can add on to the sunflower and sesame seeds. So these are the especially these food material has designed to maturation of the follicle and ovulation also. Next slide. See, like in our OPD also, our PG scholars and students, house surgeons are demonstrating to the patients to go for the to adapt the yogasanas regularly. So this will relieve their PCOD and regularizes the menstruation. And if they do it very regularly, and particularly this Titirasana and all, Paschimottanasana and all, they improve the pelvic circulation, and they disintegrate the proliferations and accumulation of the fat, so that it normalizes the menstrual cycles, and also the pranayama. And next slide. In our OPD also, our scholars are showing faculty to the patients, like how we can use the available drugs, like you can see the Adhatoda Vasika, that is the Vasa, and since it is a very having Tiktarasa, and it is one among the Panchatiktas, so it is having very Kadava Rasa, but still it is good in like astringent property. We can use it as a Swarasa to control the abnormal uterine bleeding, dysfunctional uterine bleeding in one of the patient, like with the AUB we are administering, but some patients may get vomiting sensation also with this. So this is very good in controlling the uterine bleeding. Thank you, madam, for giving this great opportunity for me on this dais. Thank you, Sharma sir, and thank you all the expert delegates and PG scholars. Thank you, everyone. You're not audible, Sulochana. Excellent presentation, madam. Excellent. You have covered everything. Great. Kamini. Respected Kamini madam.
मुझे हाँ हेलो। जी। हाँ मैडम। हाँ हाँ, अब सुनाई दिया, मुझे बीच में यस। आवाज नहीं आती। हम्म हम्म Thank you so much, Sulochana. It was really nice presentation, short and crisp. So now I would like to welcome Dr. Ramadevi Madam for her opinion, expert opinion, Ma'am, or say some few ma'am, lines. excuse me, ma'am. Can I just ask one question? Yeah, yes, madam. Yeah, sure, madam. Namaskar, Welcome, ma'am. madam. Very informative. मैम मैडम ने अत्यार्थ में जो पत्र बताया उसमें दधी लिखा है, so that दधी is दही और what? Because दही itself is उष्ण वीर्य, I suppose. So that I just wanted to clear that. Dadhi, madam, am I Is it audible to दधी you? or dahi? Yeah, Dadhi, though it is Abhishandakara, so thinking that it is like a do Stambhaka also, that's why we are suggesting the Dadhi. Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, Kandi ma'am, please continue, ma'am. जी. Anyone want to add something? Dr. Shirisha? मैम नमस्कार। Namaskar. Namaste, Shri. Namaste, madam. Very informative session, madam. Really, it's very good and very good to hear you, ma'am. Thank you Thank so you. much. Just with your permission, I want to add two things, Sure. ma'am. Hmm. For PCOD condition, you have already said complete picture you have given, and what I observed is that if you ask the patient to take regularly the pineapple is arthavagenan, so it is easily available to them, and they will enjoy that fruit also. So Yeah. most of the time, regular intake of the pineapple will induce the cycle, that thing, and kumari. Yeah. These two things, if they will regularly take, they will help them to clear the PCOD and induce the cycle and regulate the cycle. Yeah, this And is what we say. Yes. and even kiwi fruits also, ma'am. Kiwi fruits, what I observed in the patients, that regular intake of the kiwi fruits is preponing the cycle. That I observed in few patients. That I want to ask, ma'am. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Kamini, ma'am. Thank you, Silochana, ma'am. Thank you, Yeah. Shirisha? ma'am. Yes. Ma'am, Yes. ma'am. Thank you, ma'am. हेलो। मंजू जी हाँ बोलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते मंजू मैडम हाँ बोलो। मैडम जी मैम, बहुत ही अच्छा था मैडम प्रेजेंटेशन। मुझे एक डाउट है मैडम, वो जो उन्होंने दो हाफ में बताया, 1 से 14 डेज तक फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड का, और 15 से 20 डेज का वो सनफ्लावर और सेसम सीड का। वो थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करेंगे मैडम डिटेल में, See, मतलब क्या उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? yeah, first 14 cycles they help for the building up of the endometrium, and endometrium के परिपुष्टि के लिए that is useful, and the latter half it is useful as two seeds. So they help for the rupture of the ova follicle. जी मैडम, इसका कुछ रेफरेंस है या मतलब कैसे आपने कहा? Reference from this e-journals we have taken. Nowadays, this is planned like a earlier speaker also from Samruddhi. She was also giving this reference. मंजूश्री, ये आजकल सीड साइकिलिंग करके चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, सीड साइकिलिंग. Seeds means these all are seeds, and ovary is having seeds. So समान से समान वृद्धि, हाँ, ऐसे कंसेप्ट लेकर जो फर्स्ट हाफ में जो है कफवर्धक एंड वो प्रीणन वाले सीड्स लेते हैं, और सेकेंड हाफ में जो रक्त वृद्धि कर जो है सारे सीड्स, ऐसे करके जो एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ा सकते हैं.
ऐसे सीड्स वो उसमें बता दिए गए हैं। तो ये हमारा कोई ऐसा शास्त्रोक्त तो नहीं है, बट सीड साइक्लिंग करके कभी लेटेस्ट ऐसा कॉमन सा रिसर्च जो है वो जनरली लोगों ने किया है, तो वो शेयर कर रहे हैं, तो फॉलो भी कर रहे हैं काफी लोग। ऐसे मैं तो खैर नहीं बताती हूँ, पर ऐसे सीड साइक्लिंग करके 2 हाफ में, मतलब प्री ओव्यूलेटरी फेज में प्रोलिफरेटिव उसके लिए, सेकेंड हाफ में सिक्रेटरी उसको सपोर्ट करने के लिए, ऐसे करके ये चल रहा है आजकल। तो मैडम ये जो थ्रू आउट पर्टिकुलर तो सीड्स सीड्स बोलते ही है खाने के लिए ना मैम। अभी सीड्स को स्पेसिफाई कर दिया, ये वाले सीड अब, ये वाले सीड अब, हाँ, लेकिन वो वैसे सीड तो सीड्स साइक्लिंग, बोलते ही थे। जी हाँ जी उसको जी सीड साइक्लिंग बोला जाता है। मैडम इसका रिसर्च हो चुका है ऑलरेडी, मतलब ये पर्टिकुलर 4 सीड्स जो बताया उन्होंने, तो इसी को ही क्यों लिया है वही मैं सोच रहा था। तो इसका मतलब इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। हाँ, इस पे वो मॉडर्न जो बोलते हैं ना, ये बॉटनी वाले लोग और ये सब, या फार्मास्यूटिकल्स वाले, फार्माकोलॉजी वाले, इन सब का चल रहा है काम। किसी का हुआ है, किसी का भी, और इस पे रिसर्च चल भी रहे हैं, मतलब काफी जगह इस पे काम चल रहा है ऐसे, जी जी है ठीक ना। है, थैंक यू। हाँ, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में भी बोल सकते हैं, फ्लैक्स सीड ये वो सब बहुत ज्यादा सब लोग ले भी रहे हैं ना। जी As हम्म। nowadays, nutraceuticals, madam, as a food material, as a which are giving the medicinal effect. So they are preparing as a nutraceuticals. या उसमें आयुर्वेद का जो सिद्धांत है ना, आहार महाभैषज्य है, ऐसा करके, आहारम ही महाभैषज्यम, ऐसा करके सिद्धांत लेकर तो फिर इसको काम कर रहे हैं इसके ऊपर। उससे मैडम वो नष्ट पुष्पांतक रस में है ना, उसका वो अनुपान है सेसम सीड, वो ब्लीडिंग कर देता है ना मैडम, उसके लिए दिया हाँ जाता हाँ है। हाँ 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 तो ये अगर हाँ पॉलिसी हाँ रप्चर के लिए या फिर ब्लीडिंग के लिए, दोनों थोड़ा हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है ये। हाँ, पर दे रहे हैं, है ना। ठीक है मैम, और थैंक यू। हम्म, और ये फ्लैक्स सीड्स जो है ये मेदो धातु पर अच्छा काम करते हैं। तो ऑल द हार्मोन्स हैव देयर मदर सब्सटेंस एज द कोलेस्ट्रॉल, सो डेफिनेटली दे शो they regulate the fat metabolism and indirectly they play an important role in balancing the hormones. I think so, ma'am. That is. yeah, yes, yes, that theory is also right. And for dysmenorrhea, it is observed that Ajwain kashaya also helps very good, ma'am. Yeah. Means, which is available at home. So directly they can prepare and they can take. So that will relieve the pain. Almost 80 to 90% pain, they will get the relief of that pain. Yeah, yes, yes. अभी किसी को और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। Yes, ma'am. Ma'am, I had in cases of long amenorrhea, like 3 months, 4 months, 5, 6 months, at that time, what is your experience, ma'am? Which are the yogas you use during that time for withdrawal kind of bleeding? Yeah. For internal, we are using this Falakruta also, Falakruta, Kumar Yasav, Ashokarista. And for such case, this Raja Pravartini Vati with warm water, 2 TAD we are administering. And Sahacharadi Taila, like Bala Taila, Matra Vasti, we are suggesting. Yes, And ma'am. when And oral medication is clubbed with procedures, madam, it is giving good results. yes, ma'am. Along with the oral medication, when we are administering the Vasti Karma, Matra Vasti and all, so that is giving good results. Along Yes, with the Raja Pravartinavati and Kumar Yasva, other like Falagruta also we can give, because it is having a very good like nutritious effect over the system. That's why we can administer the oral, we can give the orally like a Falagruta, and Matravasti we can choose. yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. And ma'am, flax seeds, when you tell them to take the seed cycling, what is the quantity they have to take, dosage? Like 1 teaspoon, like 5 grams. In some patients or some people, like it is also a food material at the sea.
to हाँ. like it is a heat generating. So some people it may create like a daha like that acidity symptoms. So 5 grams, 3 to 5 grams, approximately 1 teaspoon. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Uh, like a food, Very like informative along session, with ma'am. food also they can take. Yes, ma'am. Ma'am, thank you so much. It was a very informative Thank you, session, Deepika. ma'am. Thank you, Thank Dr. Deepika. रामी सर 5 मिनट आपका हमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स. यस मैम. जी सर. बहुत अच्छा रहा. मैम सुलोचना जी को, रमा देवी जी को, सभी को मेरा नमस्कार. सुलोचना जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया. मुझे लगता है कि एक एक पॉइंट जितने भी आर्तव के आर्तव रोगों के जो भी हैं, 2 तरह के ही होते हैं मोस्टली. एक तो होता है आर्तव ना आना, और एक होता है आर्तव आना. आर्तव ना आना के अंदर भी अलग होता है. क्रिप्टोमेनोरिया होता है, एमिनोरिया होता है, ट्रू एमिनोरिया होता है, सूडो एमिनोरिया होता है. और दूसरा होता है अपने आना. तो आना किस तरह से, अधिक मात्रा में आना, कम मात्रा में आना, रुक रुक के आना, दर्द के साथ आना. तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें अपने को रोगों, मैडम ने दवाइयां बहुत बताई, मेडिसिन खूब बताई, उनका उन्होंने मोड ऑफ एक्शन भी बताया. तो मोड ऑफ एक्शन भी अपने दोषों के अनुसार देखना पड़ेगा. कृच्छार्तव कोई हमारे यहाँ इस तरह की कोई डिजीज के बारे में मुझे तो लगता है आयुर्वेद में नहीं है. यहाँ उदारता योनि जरूर कही गई है, यहाँ पर अपने कृच्छार्तव का वर्णन किया गया है. तो उस कृच्छार्तव के अंदर अपने को संप्राप्ति बनानी पड़ेगी. क्या है, उस संप्राप्ति के आधार पे अपने को देखना पड़ेगा किस तरह की कौन सी मेडिसिन कहाँ काम करती है. अब अपने देखना पड़ेगा कि जैसे अपने देखा कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो ब्लीडिंग होने के कौन कौन से कारण हैं, उस कारण के अनुसार मेडिसिन देखनी पड़ेगी. जान लीजिए, मान लीजिए किसी पेशेंट को अगर उसकी एंड्रोमीट्रियम को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो भी मेंसेस होता है और प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस होता है. इसी तरह से अगर रप्चर होता है, कॉर्पस लुटियम होता है, कॉर्पस लुटियम कई दिनों तक चलता रहता है, तो भी ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है. और अगर शेडिंग प्रोलॉन्ग्ड होती है, रिपेयरिंग ईस्ट्रोजन की कमी है तो रिपेयरिंग कम होगी, रिपेयरिंग देर तक चलती रहेगी, देर तक चलेगी, तब देर तक मीटिंग अपनी ब्लीडिंग चलेगी. तो हर के अंदर अपने को दोष क्या, अपने को ये देखना पड़ेगा कौन सा दोष इन्वॉल्व. अभी जस्ट मैडम ने बात की थी, वासा का प्रयोग बताया गया था. तो वासा का प्रयोग, अब देखिए ब्लीडिंग होती है तो कहाँ कहाँ से हो सकती है. एक तो अगर यूट्राइन कंडीशन, यूट्राइन जो ब्लड सप्लाई है उसमें यूट्राइन कंजेशन बढ़ता है, जो पेल्विक कंजेशन जिसका कारण बनता है. तो पेल्विक कंजेशन के कारण की वजह से, कोई भी कारण जो हो पेल्विक कंजेशन का, वो सारे के कारण यूट्राइन ब्लीडिंग के कारण बनते हैं. तो उनका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा. जैसे अपने मान ले 10 मूल का प्रयोग हम करते हैं, तो एंडोमीटर की प्रॉब्लम की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है, उसमें इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि अपने मायोमीट्रियम के अंदर. मायोमीट्रियम में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टल होता है, 10 मूल का काम होता है 10 कॉन्ट्रैक्शन करने का. इसी तरह से एरन मूल का, कार्पास मूल का प्रयोग किया जाता है. तो यूट्राइन ब्लीडिंग का तो कार्पास मूल का प्रयोग भी करते हैं, एरन मूल का भी प्रयोग करते हैं, 10 मूल का भी प्रयोग करते हैं. तो एंड्रियोमीटर की अगर मायोमीटर में क्या है, मायोमीटर जो फिजियोलॉजिकल लाइगेचर्स हैं उनको अपने कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो अपनी ब्लीडिंग को बंद करती है. जहाँ एंडोमीटियम की बात आती है, तो एंडोमीटियम के अंदर से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो स्पाइरल आर्टरीज हैं अपने, उसके बाद में रेडियल आर्टरी है, उसके बाद में अपने अर्कुएट आर्टरी है. उनके अंदर पेल्विक कंजेशन किसकी वजह से हो रहा है, मान लीजिए किसी के अंदर पोर्टल वेन अपन हाइपरटेंशन हो रहा है या अपने पेल्विक कंजेशन की वजह से हो रहा है, तो उन कंजेशन को दूर करने का, अभी जब हम लोगों ने बात कर रहे थे, अभी जस्ट बात हो रही थी उस पे रजय प्रवर्तनी पट्टी पे. तो रजय प्रवर्तनी पट्टी कहाँ काम करेगी, रजय प्रवर्तनी हिंगू है उसके अंदर, टंगड़ है उसके अंदर, एलुआ, एलुआ का मतलब है अपने कुमारी है. तो कुमारी आसव और कुमारी दोनों देने की जरूरत नहीं. कुमारी आसव क्या काम करता है, वासोडाइलेशन का काम करता है, तो वो ब्लीडिंग को बढ़ाएगा. जहाँ एमिनोरिया है या हाइपोमेनोरिया है तो उसके अंदर अपने को कुमारी आसव देना है और कुमारी भी देनी है. मगर जिसको हैवी मेंसेस हो रहा है उसको अंदर अगर कुमारी देती तो वो गलत हो जाएगा मामला. तो वहां पर अपने को देखना पड़ेगा कि हीनार्तव है, कर्चार्तव है, अत्यार्तव है, प्रोलॉन्ग अगर ब्लीडिंग हो रही है,
दूर्वा का भी प्रयोग करते हैं, चंदन का भी प्रयोग करते हैं। तो कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है? तो कैपिलरी के अंदर से हो रही है। कैपिलरी को अगर बंद करना उसका अलग हो जाएगा। जैसे फलगर्त की बात की गई, तो फलगर्त के अंदर अगर एंडोमीटर हाइपरप्लेजिया है तो फलगर्त के अंदर उसमें काम करेगा। जहां तक है अपने बस्तियों का प्रयोग है, तो बस्तियों का अलग अलग प्रयोग मैडम ने अच्छी तरह से बताया कि कौन सी बस्ती किसमें दें, कृच्छार्थम में कौन सी देंगे, अगर अत्याचार हो रहा है तो कौन सी देंगे, सहचरादि कहाँ पर देना, सहचर तिल की कहाँ देनी है, अपने नारायण तिल की कहाँ देनी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरी की पूरी देखा जाए कारण क्या है, निदानम परिवर्जनम को देखते हुए कारण क्या कारण हो सकता है, उस कारण को देखेंगे। क्षीणार्तव है और आर्तव क्षय है। तो आर्तव जो धातु क्षय की वजह से होता है, सीड की बात चल रही थी, तो आर्तव क्षय हो रहा है, तो आर्तव क्षय धातुओं की क्षय की वजह से होता है। तो आर्तव क्षय हो रहा है तो वहां पर सीड का प्रयोग करेंगे। सीड में क्या है, सीड में प्रोटीन भी है। और मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उसके अंदर जहां पे भी प्रोटीन होती है वो अपने उसके साथ में फैट होता है। चाहे सोयाबीन हो, सोया सबसे बड़ा प्रोडक्ट है फाइटोएस्ट्रोजन का। तो कोई भी प्रोटीन होती है उसके साथ में फैट रहता है, या फैट के साथ में प्रोटीन होती है, चाहे सोया हो। और काले तिल है, काले तिल की बात हुई थी, महिलाओं के अंदर काले तिल का प्रयोग बताया गया है। अगर आर्तवजनक है, पाने मूत्र मुदिष्ट तिल मास सुराहिता, अगर एमिनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया है, तो उसके अंदर काला तिल देंगे। तो उसमें बताया पानी मूत्र मुदिष्ट और तिलमा से सुराहिता, तो वहां पे सुरा भी दी गई है। सुरा क्यों दी गई है? वो भी अपने वास्तु डायलेशन करती है, तो एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन मिलेगा, एंडोमेट्रियम अपने वो न्यूट्रिट होगी और मैच्योर रोकने के बाद बाहर आएगी। तो एक एक चीज को अपने को देखना पड़ेगा, पैथोलॉजी क्या बन रही है, उस पैथोलॉजी के अनुसार अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट के टू पेशेंट अपने डिफर कर जाता है। हर पेशेंट का जरूरी नहीं है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को फाइब्रॉइड है, और फाइब्रॉइड के अंदर अगर हम उसको वासा देते रहे, दूसरा देते रहे, तो इतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, अपनी सिम्टोमेटिक रिजल्ट मिलेगा। उसको फाइब्रॉइड को कम करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, या बस्ती देंगे तो उसमें निश्चित ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो मिल जाएगा, मगर उसको हटाना है। पॉजिटिव फैक्टर है उसके अंदर, अपने एंडोमीट्रियम के अंदर या मायोमीट्रियम के अंदर उसको एप्रिप्लेजिया कर रहा है, कंजेशन बढ़ा रहा है। डिस्मेनोरिया भी दो तरह का है। डिस्मेनोरिया में कौन सा डिस्मेनोरिया में काम करेगा? तो अगर स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया, तो मोस्टली स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया जो होता है स्पाज्म की वजह से होता है, उसमें वायु उड़ा हुआ है। और कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया है तो वहां पे कंजेस्टिव में वायु तो है, मगर आवृत वायु है, श्लेष्मा के द्वारा आवृत वायु। तो कंजेस्टिव में श्लेष्मा का, वायु का, दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से डोज कौन सा है, उस डोज के आधार पर हम सबकी चिकित्सा करते हैं, तो निश्चित ही रिजल्ट मिलते हैं। अभी अब डिस्कस काफी हो गया। डिस्कस के अंदर हम लोगों ने प्रोटीन की भी बात कर ली, न्यूट्रिशन की भी बात कर ली। तो कई फैक्टर्स को देखते हुए, अगर योनि रोग अगर 20 लिखे हुए हैं, तो योनि रोगों को देखते हुए अगर इस तरह से विभिन्न प्रकार के आर्तव के दृष्टियां हैं बताई हैं, उन्होंने 8 प्रकार की आर्तव दृष्टि बताई हुई है, तो उनका मेडिसिन जो बताई उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी की कहाँ प्रयोग करेंगे ये देखना पड़ेगा, कि अगर वो ग्रथित है तो ग्रथित का प्रयोग करना पड़ेगा, दुर्गंधित है दुर्गंधित का प्रयोग करना पड़ेगा, व्यवर्ण है व्यवर्ण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मेडिसिन का आधार पर आर्तव की जो दृष्टियां हैं उनके अंदर करना पड़ेगा। जहां तक लीवर की बात है, आप पूरा का पूरा हमने बताया गट ब्रेन, अपने गट ब्रेन कनेक्शन। तो गट ब्रेन जो रिलेशन है, गट ब्रेन रिलेशन है, उसमें माइक्रोबायोमास के ऊपर डिपेंड करता है। अपने एब्डोमेन के अंदर उसमें माइक्रोबायोमा जो बस्ती है उसको माइक्रोबायोम को ठीक करता है, जो अपने गट ब्रेन को ठीक करता है। तो गट ब्रेन ठीक होता है, उसकी वजह से अपने हिस्टोजेनेसिस होता है, या FSH होता है, उसका भी अपने उसमें रिजल्ट मिलता है। तो जरूरी नहीं है बस्ती से लोकल प्रयोग ही करें, लोकल प्रयोग के साथ साथ में ब्रेन तक काम करती है। इसलिए कई जगह ऐसी अपने बस्ती के द्वारा रिजल्ट मिल जाते हैं जिसको अपने अनएक्सपेक्टेड होते हैं उस तरह के। तो बस्ती इस तरह से काम करती है, लोकल तो करती है, क्योंकि अब जब वो पेल्विक रीजन में जा रही है, पेल्विक प्लेक्सस के अंदर जा रही है, लोकल रीजन में जा रही है, वहाँ के वेसल्स के ऊपर काम करेगी, वेसल्स के साथ में वहाँ के जो मस्कुलर टिश्यूज है उनके ऊपर काम करेगी, नर्व्स के ऊपर काम करेगी, मगर वो गट ब्रेन कनेक्शन की वजह से ब्रेन के ऊपर भी काम करती है। तो इस तरह से अपने को देखा जाए तो मल्टीपल फैक्टोरियल होने के परिणाम स्वरूप, मल्टीपल फैक्टोरियल को एक एक फैक्टर को देखते हुए, हर पेशेंट के अंदर एक एक फैक्टर को देखते हुए अपने उसको प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही रिजल्ट मिलता है। तो मैम ने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया और मैं उनको बधाई देता हूँ, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, कामिनी जी इसको बहुत अच्छी तरह चला रही हैं। और कामिनी जी के जितने भी हम जैसे स्टूडेंट हैं वो सीखने के मिलता है और गप्पे मारने भी मिलता है और कुछ न कुछ बोलने के लिए भी मिलता है। तो मैं कामिनी जी का और पवन जी का धन्यवाद कहता हूँ और अपने सभी को
पुनः धन्यवाद कहता हूँ। हम लोग चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मिलती है, मगर आचार्य ने जो कहा है आचार्य से बाहर नहीं जा सकते। आचार्य जो कह गए हैं, हिंदू है तो हिंदू अनुलोमन करता है, उसके अंदर टंकण है तो टंकण भी वही काम करता है। अब कहाँ पे रक्त अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको वेसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो वहां बता दिया आचार्य शुरू ने। पित्त रस जो है पित्त को समन करता है, कसाय पित्त मधुरा पित्त मन्य तो पूर्वते। तो कसाय रस का प्रयोग कहाँ करना है, तिक्त रस का प्रयोग कहाँ करना है, मधुर रस का प्रयोग कहाँ करना है पित्त को समन करने के लिए। तो अभी बताया वासा का प्रयोग क्या, वासा को रक्त पित्तनाशक आ गया है। तो रक्त पित्त की जब उसकी अष्टदल की चिकित्सा करते तो आचार्य कहता है रक्त पित्त हरि क्रियाम। तो रक्त पित्त की जो चिकित्सा की गई है वही है शरद की चिकित्सा कही है, इसलिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का पुष्पक रस भी ले सकते हैं, शीशम के पत्तों का रस प्रयोग किया जा सकता है। जो भी वासु कंस्ट्रक्शन की काम करते हैं और वासल वेसल के अंदर थ्रोम्बोसाइटिक प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, तो थ्रोम्बोसिस का काम करते हैं, तो उसके अंदर मेडिसिन अलग अलग हो जाती है। कसाय औषधियां हैं वो सारी की सारे अपने क्लोटिंग का काम करती है। वहां पे क्लोटिंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है जो अपने क्लोटिंग की प्रॉब्लम है, तो वहां पर उस तरह की काम करेंगी। तो क्या कारण है उसका कारण को फाइंड आउट करें, और फाइंड आउट करने के बाद उसके आधार पर मेडिसिन चूज करें कि हाँ शतावरी देनी है। अशोक कसाय है, वृक्ष है, तो अशोक का अलग रिजल्ट है, शतावरी का अलग रिजल्ट है, मुसली का अलग रिजल्ट है, इस तरह से बेदारी कंद का अलग रिजल्ट है। तो इन चीजों को और तो कहाँ अपने को कुमारी प्रयोग करनी है, कहाँ बेदारी कंद प्रयोग करना है, तो इस तरह से अपने प्रयोग के आधार पर हम लोग चिकित्सा करते हैं तो निश्चित ही रिजल्ट मिलता है। मुझे तो कई पेशेंट को ऐसा लगता है, रक्त के पेशेंट आते हैं उनको मैं दूरवा रस ही कह देता हूँ कि 2-2 चम्मच दूरवा रस निकाल के खाली पेट ले लो मिश्री के साथ, मुझको रिजल्ट मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है बहुत सारी मेडिसिन की जगह पे पेशेंट को सही तरह से डायग्नोस कर पाते हैं, उसमें रिजल्ट मिल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सभी को मेरे को सुना और उसके लिए मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। रामी सर नमस्ते, थैंक यू, बहुत ज्यादा एकदम फटाफट बताते हैं, बढ़िया बढ़िया आप सर। सर आपने कुछ एक मदार का यूज बताया था कहीं, मायोमेट्रियल कहीं। हाँ, मदार का प्रयोग जो है, मदार अर्घ है, अग्नि है, तो अगर अग्नि का अगर प्रयोग कर रहे हैं आर्तम अग्नि, हम अगर आर्तम कम आ रहा है तो वहां पे मदार का प्रयोग करेंगे। और मदार का जो प्रयोग है हाइपर जो अपने पोर्टल हाइपरटेंशन होता है उसके अंदर भी काम करता है। और इसी तरह से हम मदार का प्रयोग जो करते हैं अग्निवर्धक, इसलिए उसको अर्क कहा गया, अग्नि इसलिए कहा गया अग्निवर्धक होने की वजह से, तो तीक्ष्ण होने की वजह से उसको हाइपर अगर मेंसिस हो रहा है, मेंसिस ज्यादा आ रहा है तो वहां पर अर्क का प्रयोग नहीं करना है। अर्क बट्टी देते हैं हम लोग, अर्क बट्टी कई बार कहाँ देते हैं जहाँ पे शूल हो रहा होता है। शंख बट्टी जिस तरह से काम करती है उस तरह से अर्क बट्टी काम करती है, मगर अर्क बट्टी की विशेषता एक और है, अर्क क्या है लैक्जेटिव भी है, परगेटिव भी है। तो अगर शूल हो रहा है और उसके अंदर विबंध भी मिल रहा है तो अपने उसके अंदर अर्क बट्टी का प्रयोग करेंगे। बाकी का शंख बट्टी है वो भी शूल पर संबंध है तो शंख का प्रयोग करेंगे। थैंक यू सर। Thank you, Ramvi sir. Thank you, Dr. Sulochana. Thank you, Dr. Shirisha, for expert comments. And thanks to all of you. For Thank you, madam. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Sharma sir and Ramveer sir. Thank you all the delegates, sir. Thank you, madam. मैं thanks to एक आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस बार गवर्नमेंट ने बड़ा अन्याय किया मेरी नजर में। उनने 8 वर्टिकल आयुर्वेद डे के सेलिब्रेट करने के बताए, उन 8 वर्टिकल्स में महिलाओं का कुछ नहीं है। मैं यदि बात करूं कि वर्टिकल्स की, आप लोग जानते हैं जैसा आयुर्वेद डे के बैनर में हमने सर्कुलेट भी किया था और संभवतः आपके कॉलेजेज में ये सभी कुछ आ चुका होगा, फिर भी मैं एक बार आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। 23 तारीख के लिए मुझे कृपया बताएं, मेरी मातृशक्ति महिला शक्ति यहाँ है। ये देखिए 8 वर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हम लोगों को दिए। लिटिल स्टेप टू वेलनेस, आयुर्वेद अवेयरनेस फॉर स्टूडेंट्स। मैं 23 तारीख को 8 वेबिनार करने जा रहा हूँ, एक एक वर्टिकल पे, लेकिन फिर भी मेरा 9वां वर्टिकल महिलाओं के लिए जरूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आयुर्वेदा फॉर वुमेन हेल्थ, हम यदि आप आदेश करें तो हम उसे 9 बजे रखें, रात के 9 बजे, आयुर्वेदा फॉर वुमेन हेल्थ, क्योंकि इस पूरे के पूरे वर्टिकल्स में कहीं भी लेडीज का वर्टिकल नहीं है।
कामिनी जी, जी तो मैं 23 तारीख को मंगलवार है, आयुर्वेद डे है, और रात को 9 बजे केवल 2 स्पीकर जनरल वुमेन हेल्थ पे भी बोलेंगे, तो ये वर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा ये मान। जी जी बिल्कुल। जय हो। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जी जी जी। अगली वेबिनार हमारी डिजिटल रिवॉल्यूशन पे है, तो यदि कोई बोलना चाहे तो जरूर रुके। मैं 10 मिनट, क्योंकि ये तो जल्दी खत्म हो गई आज, 23 मिनट पहले। अब नहीं, अगली हमारा टाइम 8 से 9 है ना, तो मैंने 9 बजे इसीलिए खत्म करवाया। नहीं नहीं, जैसा मंच, मंच आपका है जी, मंच आपका है। आप, नहीं, आपने बोला ना आयुर्वेदा डे की रिलेशन में अब 8 से 9 होगा, तो हमने डर के मारे इसलिए। कि पिछली बार क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाए थे, किसी हाँ। को बुरा न लगे, तो इसलिए मैंने आज फिर 9:30 बजे तक ही किया। आप ओहो, लोग आज पहले हैं, बाकी बाद में। मेरे ध्यान में था कि अभी 8 से 9 ही है, अभी नौ, जब तक आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन है, नहीं नहीं, बहुत तो अच्छा। इसीलिए मैंने इसको तो मैं तो कंक्लूड आप लोगों से, इतने बड़े बड़े वक्ता मेरे साथ हैं, मैं 1 मिनट में चेंज करता हूँ। डिजिटल रिवॉल्यूशन हमारे आयुर्वेद में कैसे हो, इस पर थोड़ा बोलिए ना। बहुत सारे लोग हैं, बोलेंगे, हमारे पास तो बहुत सारे बैठे हुए हैं सब। इसीलिए तो इतने सुंदर सुंदर वक्ता हमारे साथ हैं। है ना, काफी लोग हैं जो अभी इसमें इनपुट दे सकते हैं अपना इस पॉइंट पे। हाँ, डिजिटल रिवॉल्यूशन तो आजकल हम लोगों के हर कॉलेज में हो चुका है। दीपिका, यू टेल